हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारे पास आया रेड हायाबुसा। देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें आपका फ्रंट का, ये रहा फ्रंट का और रेयर का टायर चेंज करने वाले हैं। फ्रेंड्स देख सकते हैं ये टायर काफ़ी घिस चुका है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स काफ़ी घिस चुका है। तो इसका फ्रंट का हम लोग वरेस्टेन का ये टायर डालने वाले हैं। तो सामने 120/70 ZR17 और पीछे में लगता है 190/55 ZR17। सामने पीछे का दोनों का टायर चेंज करने वाला है। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो पे बने रहे, दिखाएंगे डिटेल्स में कि किस तरीके से टायर चेंज किया जाता है। और ओवर लुक, गाड़ी का लुक देख ही सकते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी हेवी लग रहा है, रेड ब्यूटी है। तो फिटिंग कर लेते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए इसको फिटिंग कर लेते हैं लास्ट। तो फ्रेंड्स चलिए 36 नंबर गोडी से इसको खोल लेते हैं। एकदम ईजी खोलना है, जैसे नॉर्मल बाइक का होता है, सेम वैसे ही सिस्टम है। इसमें ज़्यादा कोई इसमें काम नहीं है। तो फ्रेंड्स चलिए देख सकते हैं पीछे का खुल चुका है। तो चलिए अब चेन उतारने के बारी। इस तरह तो चेन उतार लेते हैं। देखिए पूरा घिस चुका है पीछे का टायर। चलिए फिटिंग्स कर लेते हैं।
फ्रेंड्स फिटिंग हो चुका है, देख सकते हैं। अब चलिए इसमें एयर फिलअप कर देते हैं। देखो फ्रेंड्स काफी चौड़ा टायर है, देखो पूरा हाथ, मेरा पूरा हाथ यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा भी नहीं आ रहा है, इतना चौड़ा टायर है, देख सकते हैं आ ही नहीं रहा है पूरा। काफी चौड़ा टायर है ये 190 का। तो फ्रेंड्स चलिए वापस इसको फीडिंग कर लेते हैं जिस तरीके से खोले हैं। सकते हैं फिटिंग हो चुका है, काफी ब्रॉड टायर है, देख सकते हैं काफी चौड़ा टायर है। तो फिटिंग कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब सामने का खोल लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स बने रहे वीडियो पे, चलिए सामने का खोल लेते हैं।
फ्रेंड्स फिटिंग कंप्लीट हो चुका है, तो मैं आपको सामने का दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं फिटिंग होने के बाद काफ़ी सही लग रहा है। तो सामने पीछे का दोनों का आपको एक साथ चेक करवा दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये रहा फ्रंट का और ये रहा रियर का, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे वीडियो देखने के लिए, ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो चैनल पर लाते रहते हैं।